protected children, the children who have lost somewhere arms, somewhere legs, somewhere they have lost their heads, the corpses are left. And I'm just wondering what and how should we name them and name ourselves, that how we are witnessing to this children's Holocaust. I would term it as a child's Holocaust in that strip of Gaza by one of the powers which feels it's strong. Yes, the state of Israel has some military might on the basis of which it feels it's very strong. But every moment, every hour, they are proving to be dwarfs. They're minions. They're minions because of their conduct. The professional militaries fight professional soldiers. The professional militaries do not kill unarmed children. I've been repeatedly saying this, that in recorded history, on the advent of the birth of Moses alayhi salam, Musa alayhi salam, reportedly the children of Bani Israel were killed by the order of pharaohs. And ironically, the people who claim to be the followers of Moses, after 2 millennia, they are following the footsteps of pharaohs rather than Moses. And that killing, senseless killing, is one of the biggest challenge, be it the Convention of Children's Rights, Human Rights, Women's Rights. You just multiply it with all the adjective and the nouns of all the rights. I think so United Nations is losing its sense of purpose. I think so the international community is losing its sense of calling itself responsible nations and governments. This appalling and atrocious act has to end. I would repeat it again. This children's Holocaust has to stop, and it has to stop now. The heart of not just Muslims. Let me convey this. Yes, we are not apologetic about our identity as Muslim. We are Muslims. We are Muslims, and this is a pride which we take for last 1400 years. We are the continuation and the conclusion of Abrahamic faith. But whatever is happening in Gaza is beyond religion. Any decent human being. And the latest figure gives us that they are around 8 billion. Probably you can't even find genuinely thousands of people amongst these 8 billion who could defend such a defenseless act. So the majority of mankind is on other side. From diversified faith, from the diversified background, everyone, men, women, children, elderly, young, are condemning this brutal act, and it should remind us that on this Children's Day, those children of Gaza, we are honestly ashamed of you. I can't look into the eyes of my own son. I feel helpless. I feel helpless because there are implications when we think to respond to such challenges. But let me remind anyone and everyone who's listening to this, these gory images in this age and time of new technology,
This is no more a written history. They should not forget. Now it has turned itself into pictorial history. These images would be reproduced, bring back to life after not just a century, rather even a millennia. It would be part of the collective memory of people of different identity groups, and it would lead for the conflict of the future causes of the future conflict. It will not resolve the conflict. It is given birth and giving birth to many more. Probably people are not responding now. Who can guarantee that this behavior will not radicalize within a decade, 2, 3, 5 century? Nobody can. All we pray, and we are trying, along with our global partners on the platform of OIC and others, to raise and pressurize the Western Hemisphere, led by particularly United States of America, that some sort of rationalization happens, some sort of sanity prevails, and immediately this war should come to an end, and the cessation of violence is an immediate target. This is not justice. This is a just immediate need and requirement. We are not saying that justice would establish when they would have a ceasefire. No, not at all. And the creation of a human corridor is a prerequisite where the children, like our own children, would probably have a chance where they may come back to life. They are vulnerable, their life is at stake, the injured, women, elderly, everyone. It is simply a genocide happening around us. And we have to raise our voice, we have to play a role, whatever we can in our own capacity, be at the governmental level or a societal level, and try and translate that this should come to an end. I thank you all for giving me this opportunity to talk. Thank you. बच्चों के आलमी दिन के मौके पर इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिससे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ खिताब कर रहे थे, और उन्होंने रिलेट किया है इसे गाज़ा के बच्चों के हवाले से, जहां पर उनका कत्ले आम हो रहा है। उन्होंने कहा है कि पेशावराना फ़ौज कभी भी निहत्ते शहरियों और बच्चों को निशाना नहीं बनाती हैं, और हम एज अ होल नेशन हम बहुत ही शर्मिंदा भी हैं, और गाज़ा में हॉलोकास्ट को अब रुकना होगा। गाज़ा सूरत हाल की बात करते हैं, जहां पर मजलूम फ़लस्तीनियों की खूरेज़ी का सिलसिला नहीं थम सका। इसराइली फ़ौज ने नसीरात कैंप पर हमले में 22 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। ख़ानदान की शहादत के बाद फ़लस्तीनी रेस्क्यू एहलकार 3 माह की बच्ची को बहलाते हुए खुद रो पड़ा। दूसरी जानिब फ़लस्तीनियों के लिए कड़े मौसम का एक और इम्तहान शुरू हो गया है। इजरायली फ़ौज ने इंडोनेशियन अस्पताल का घेराव कर लिया। नसीरात कैंप पर हमले में 22 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इजरायली हमले के बाद फ़लस्तीनी मेडिकल टीम का एहलकार 3 माह की बच्ची को बहला रहा है, जिसका पूरा ख़ानदान शहीद हो गया। फ़लस्तीनी खातून की दुहाइयाँ, इजरायली मिसाइल हमले में एक पल में ख़ानदान उजड़ गया। बेकरार माँ अपने 4 बच्चों को तलाश करती फिर रही है। गजा में मौसम तब्दील, रवां हफ्ते से वक्फे से जारी बारिश के साथ ही मौसम शदीद हो गया। लुटे पिटे तबाह हाल फ़लस्तीनियों के लिए कड़े मौसम का एक और इम्तहान शुरू हो गया। गजा में अल शिफा अस्पताल की तबाही के बाद इसराइली फ़ौज ने इंडोनेशियन अस्पताल का घेराव कर लिया। बराह रास्त गोले दागे जाने में एक डॉक्टर ज़ख्मी हुआ, जबकि अस्पताल के नज़दीक आग भड़क उठी।
अल-अऊदा अस्पताल पर भी इसराइल ने हमले किए। अल-शिफा के 250 जख्मियों की कोई खैर खबर नहीं। 7 अक्टूबर से इसराइली बमबारी में अब तक फ़लस्तीनी शुहदा की तादाद 13,000 से ज़ायद हो गई। इबलीस की अगर कोई तारीफ हो सकती है तो वो इसराइल है। इसराइली फ़िज़ाइया के हमले में गज़ा की मस्जिद को निशाना बनते देखा जा सकता है और इस दौरान सेहूनी शहरियों की खुश होने की आवाज़ें पस मंज़र में सुनी जा सकती है। ताज़ा हमलों में 4 मसाजिद को शहीद किया गया, जिनमें शुमाली गज़ा की मस्जिदुल कस्साम, मस्जिदुल खलीफा, मस्जिदुल हाइफा और मस्जिदुल अमीन मोहम्मद शामिल हैं। गाजा में हमास की इसराइली फौज के खिलाफ गुरीला कार्रवाइयां भी जारी हैं। अल कस्साम के अल-यासीन RPG मिसाइल के हमले इसराइली टैंकों के लिए एक भयानक ख्वाब बन गए। 17 टैंकों और मिलिट्री गाड़ियों को तबाह कर दिया। 6 इसराइली फौजी एहलकार हलाक हो गए। अल कस्साम ब्रिगेड ने वीडियो जारी कर दी। हमास की इसराइली फौज के खिलाफ गुरीला कार्रवाइयाँ। अल कस्साम के अल-यासीन RPG मिसाइल के हमले इसराइली टैंकों के लिए भयानक खौफ बन गए। हमास ने नई वीडियो जारी कर दी, जिसमें देखा जा सकता है कि अल कस्साम ब्रिगेड के कमांडोज गजा में दंदनाने वाले टैंकों के परखचे उड़ा रहे हैं। 0 रेंज से मिसाइल दागे गए। हमलों में 70 टैंक और मिलिट्री गाड़ियां तबाह की गईं। अल कस्साम ब्रिगेड ने कहा कि छापामार कार्रवाइयों में उसने 6 इसराइली फौजी एहलकारों को हलाक किया है। इसराइल फौज के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ जुनूब मशरकी गजा के इलाके जोहोर अल-दोक में की गईं। अल कस्साम ने मारे जाने वाले इसराइलियों के यूनिफॉर्म्स और दीगर फौजी इस्तेमाल के सामान की वीडियो भी जारी कर दी। इसराइल ने अपने 59 फौजियों की हलाकतों का एतराफ़ किया है। इसराइली फौज ने गजा के अल-शिफा अस्पताल के नीचे 10 मीटर गहराई में 55 मीटर तवील सुरंग की मौजूदगी का दावा कर दिया, जिसे गजा की वजारत सेहत ने झूठा करार दे दिया। दूसरी तरफ कहा गया कि 7 अक्टूबर को गजा में म्यूजिकल फेस्टिवल पर हमले में हमास मुलविस नहीं था और मीडिया में प्रोपेगेंडे की नाकामी और अब फ़लस्तीनी अथॉरिटी के बयान पर इसराइली वज़ीर आज़म अपनी आवाम के सामने आने पर मजबूर हो गए। नेतन्याहू ने अथॉरिटी तर्जुमान अबू माज़ान के बयान को नाकाबिले कबूल करार देते हुए कहा कि ये सच से इनकार है। अबू माज़ान ने तो हॉलोकॉस्ट के वजूद से भी इनकार किया है। इसराइल अपने शहरियों पर हमले में मुलविस नहीं। गाजा में फ़लस्तीनियों का बेदर्दी से कत्लेआम जारी है। वहाँ हज़ारों लापता होने वाले अफराद में अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलियावी बाशिंदे ने कौमियत और मजहब से हटकर इंसानियत के नाते मैदान में फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती किया। 3,700 लोग लापता है, उसमें भी ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन हैं और ज़्यादा इम्कान यही है कि ये मलबे तले दब गए हैं, जिसके निकालने के अब तक कोई सूरत नहीं निकली है। जब दुश्मन हमें जला रहे थे, जब दुश्मन हम पर बमबारी कर रहे थे, जब दुश्मन हमारा कत्ल कर रहा था और हमारा जुर्म सिर्फ यही था कि हम मुसलमान हैं, हमारा जुर्म सिर्फ यही था कि हम फ़लस्तीनी हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल में इन बच्चों के हाथ अगर उन जालिमों के गिरबान में होंगे तो उसी तरह ये खामोश रहने वाले और बुज़दिली का और बेगैरती का और बेमानी का कफन ओढ़कर और चादर ओढ़कर सोने वाले हुक्मरानों के गिरबानों में उनके हाथ होंगे। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार आलमी चैंपियनशिप का ताज अपने सर सजा दिया है। अहमदाबाद के मैदान में 1 लाख से जायद गमजदा चेहरों में 11 कैंगरूज के चेहरे खुशी से तिमतमा रहे थे। ट्रेविस हेड का नाम भारतीय शायद कई साल तक फरामोश ना कर पाएं।
Head lofts him away, times it nicely. Again, silence. 47 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद भारतीय शायकीन ने आसमान सर पर उठा लिया। Finger goes up. Got him. Smith goes. Boomer did something different. लेकिन ट्रेविस हेड और लेवोशीन के इरादे कुछ और थे। Beautiful shot. Calls through for a single, needs to hurry. 100 for Travis Head on the biggest of stages. दोनों की शराकतदारी ने ऑस्ट्रेलिया को छठी बार चैंपियन बनवा दिया। He'll come back for two. And Australia win the World Cup for the 6th time and in front of 120,000 people. They've upstaged the home team in magnificent fashion. कामयाबी के झंडे गाड़ने वाले सूरमा कैंगरू बॉलर्स के सामने बिल्कुल बेबस नजर आए। Finally a miss-up. Could this be a moment? Oh. This time that seems to be. Oh, good ball, good ball. छठी बार वर्ल्ड कप जीतकर कैंगरूज ने भारतीयों को छठी का दूध याद दिला दिया। स्टेडियम में ऐसा सन्नाटा हुआ जिसकी गूंज बहुत देर तक सुनाई देगी। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं। यहाँ पर गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद के कत्ल का मामला है। मुलजिम की दरखास्त जमानत को खारिज कर दिया है। अदालत ने दरखास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की है। एडिशनल सेशन जज शाहिद महमूद ने इस दरखास्त से जमानत पर समाअत की है। क्या डिटेल्स रही कार्रवाई की, जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। लाहौर की सेशन अदालत ने गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद को हलाक करने वाले मुलजम की दरखास्त जमानत वापस लेने की बिना पर खारिज कर दी है। एडिशनल सेशन जज शाहिद महमूद ने दरखास्त जमानत पर समाअत की। मुलजम की जानिब से दरखास्त जमानत में ये मौका इख्तियार किया गया था कि गाड़ी का जो हादसा है वो ये इत्तफाकी हादसा था। इसमें कत्ल करने के जो मकसद नहीं था, जिस पर जो मुद्दई के वकील की जानिब से अदालत में यह मौका इख्तियार किया गया कि मुलजम को जमानत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत भिजवाया जाए और मुलजम की दरखास्त जमानत जो है उसको मुस्तरद किया जाए, जिस पर मुलजम की जानिब से अदालत ने दरखास्त जमानत वापस लेने की बिना पर खारिज कर दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका अब्दुर्रहमान, अपडेट कर रहे थे आप। नाज़रीन, गैर कानूनी तामीरात गिराने के मामले पर अमल दरामद न करने पर अदालत बरहम हुई है। DC सेंट्रल और SSP सेंट्रल को ज़ाती हैसियत में अदालत ने तलब कर लिया है। SBCA से इमारत को मिसमार करके 12 दिसंबर को रिपोर्ट तलब कर ली गई। सिंध हाई कोर्ट ने SBCA रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार भी किया और कहा कि ये कह देना काफ़ी है DC और SSP ने ताउन नहीं किया। अदालत, ये तो SBCA के लिए आइडियल सूरत हाल है। जस्टिस नदीम अख्तर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। आज SBCA यही चाहता है, जस्टिस नदीम अख्तर की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने SBCA की रिपोर्ट पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया है। IMF के मुआहिदे के तहत 7 दिसंबर तक बिजली की कीमतों में इजाफा करना होगा। जनवरी में गैस की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। इन मुश्किल हालात का जिम्मेदार कौन है, जानते हैं इस्लामाबाद से अली शेर की रिपोर्ट में। IMF की सख्त शराइत, महंगाई ने अवाम को दिन में तारे दिखा दिए। डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो आई, लेकिन महंगाई में कमी ना आई। महंगाई की शरह 41% से जायद। सबसे ज्यादा कुदरती गैस 480% महंगी हुई। अवाम का कहना है कि हम गरीब से गरीब तर हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हुक्मरानों ने जो पैसा लिया वो पता नहीं किधर लगाते हैं, लेकिन ये सारा बोझ अवाम पे डालते हैं। बस गरीब को गरीब से तर कर रहे हैं। अब गरीब जो है बेचारा, जो लोग अफोर्डिंग थे उनके बहुत बुरे हालात हो गए। पेट्रोल थोड़ा सा कम किया है, 200% बढ़ा के 5% कम कर देते हैं। अरकान सेनेट की अक्सरियत ने महंगाई की जिम्मेदार गुज़िश्ता हुकूमत, जबकि साबका हुक्मरान इत्तेहाद ने PTI के IMF मुआहिदे को करार दिया। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की, हमारे पॉलिटिशियंस की, हमारे सिस्टम की, कि वो मतलब ये नहीं समझते। वो उन्होंने एक ही तरीका समझा है कि अवाम से पैसे निकालो। अवाम से कैसे निकाले जा सकते हैं? वो गैस के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, टैक्सेस हैं। ये जो बोझ है ये मरात याफ्ता तबके पर डालें, ये अशरफिया पे डालें
बेरोजगारी और गरीबी मुल्क में इतनी बढ़ गई है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बज़ाहिर खुद मैं सेनेटर हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, तो आप खुद सोचें गरीब इंसान कैसे अफोर्ड कर सकता है। अब मैं फिर वही बात करूँगा, सब जिम्मेदार हैं इसके। IMF के जंगल से जान छुड़ाना ऐसा है जैसे अपने मजहब से जान छुड़ाना। IMF से जब मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो ये अवाम के लिए एक बहुत बुरी खबर होती है। अरकान सेनेट हूँ या अवाम, सभी कहते हैं IMF से होने वाले मुआहदों के नतीजे में अवाम को पहुंचने वाली तकालीफ के जिम्मेदार सब के सब हैं। कैमरामैन शबीर अहमद के साथ अली शेर, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में 1971 की पाक भारत जंग की कहानी स्याह हरूफ में लिखी जाएगी। पाकिस्तान पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए गए। जंग में शरीक मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद यासीन का कहना है ख़वातीन से ज़्यादती और दीगर मज़ालिम पाकिस्तानियों ने नहीं किए थे। In March, situation worsened. Atrocities were committed on Biharis, West Pakistani residents, as well as pro-Pakistan elements, including Bengalis. This resulted in launching of Operation Searchlight on 26 March. I was part of that operation as a platoon commander at Dhaka in Gulshan area. We went to Chittagong. City had been virtually captured by the rebels. They had large number, they had a regiment and they had a Bengali regimental center. So there were large number of rebels and the city had lost control. The only place available to us to hold United Pakistan was a small place in cantonment and the naval base at Chittagong. So we went there as TAC headquarters and we tried to lead the operation, GOCO supervise the operations of retaking Chittagong. So I remained with this brigade while we were regaining control of Chittagong city. This was a large operation which was conducted day and night. End of May, I was moved back to Dhaka. We conducted defensive operations holding Indians and Muktis back. During early 1971, there was not visible hostility towards military or West Pakistanis. Bengali nationalism, it took root, became very, very visible and aggressive. And the anger was directed towards West Pakistanis working in East Pakistan. That included Pathans and various other businessmen, school teachers, and most of all Biharis who were there. They had migrated from Indian province of Bihar during 47 and now they were considered to be highly pro-Pakistan, pro-United Pakistan. These atrocities were committed by Bengali nationalists acting as Mukti, acting as rebels, acting as ex-soldiers. This frenzy was sponsored